Good evening, friends. And amongst us, we have Mr. Vasant Patwardhan. And those who have been connected with us, they have seen that when we talk of the English series being taken on the Beyond Law CLC, Mr. Patwardhan has his own style of hammering the points and the subtle way in which he can explain the meaning within the English as well as Hindi, and rather I will say in expressions of bilingual, or what we call as Hindi English, to explain the meaning which even a common man can understand. This series of more expressions on the grammar has been doing exceedingly well on the channel of Beyond Law CLC. And today we have adverbs are more than add plus verbs, a specific style of expressions used by Mr. Vasant. It only shows his mind to show us what they say. A common man will always think on a 2D vision, and a man with insights will express it in a 3D vision. And that's what Mr. Patwardhan is. To express adverbs in his own expressive style is always an art to be learned from a person who knows the art to express it. Without taking much time, since it's a session of just around 30 minutes, I'll ask Mr. Patwardhan to straight away nail with the hammer on the point. Over to you. Yes, sir. Very good evening to all of you. At the outset, I should thank Vikas sir for giving me an opportunity to share whatever I know with all the very learned participants and the viewers of this channel. And in the series, as he told, a grammar series, which is the building block rather of any language, we are very serious about introducing you to the blocks of the grammar, that is parts of speech. We are not compromising in any respect, either because of the time or because of some attractive viewership or numbers and all, but we are very sincerely approaching the subject to transfer the knowledge. So in that way, on that, walking on that path, we started with noun, we walked along a pronoun, adjective, verb, and today we are here to discuss about the adverbs. Usually what we feel that we know adverbs, definitely by the virtue of our age, maturity, we know adverbs, but we don't know to the amount which we are supposed to know it. As far as knowledge is concerned, there is no limit. But what we know by the virtue of practice or maturity is only a, जैसे कहते हैं ना, काम चलाओ, उतना ही जानते हैं. That's why we have kept the title as adverb is something more than add plus verb. That is, what we know adverb as, it is only the verb or a word which adds something, qualifies verb. As adjective was qualifying a noun or a pronoun, we know that adverb qualifies or adds some meaning to an existing verb. On that basis, we know it. But after half an hour of time spending on this subject, you will appreciate that yes, we were to know all this, whatever has been discussed in this half an hour. So straight away I shall take you to the subject. I request Vikas sir, please allow me to share the slide. In a minute. Okay. Done. Is it visible? Right. So I have put it on this small page so that it is for the convenience, like, you know, it is technically called as a teaching aid. I don't want to miss any single small object of this part of it. At the same time, I want to
sensitize more senses. Like you are hearing me, I want you to see also something on the board so that your attention is concentrated and you gain more. So I have put it like this. The first sentence is provocative, rather it is in line with the title which we have selected, because adverbs are not only the words which qualify the verbs, but they also qualify the adjectives and already existing adverbs. Let me repeat this. Adverbs are not just the words which add meaning to the verbs, but also they have got two more jobs to do in English grammar. That is, they qualify, they add meaning to the adjectives of the sentence, as well as they add meaning to already existing adverbs. So it is a word which qualifies a verb, an adjective, and an adverb. So on that line, let me start with the easiest part. That is, we usually know. What we know is adverb is a word which usually ends with lys, like proudly, usually, loudly. But we don't recognize with the same degree of confidence that fast is also an adverb, hard is also an adverb, in is also an adverb, out is also an adverb. At the beginning, I have told you that it is not the word which is titled as adverb, preposition or so. It is the job done by the word, or you can say we categorize them in parts of speech by the job they do in that particular sentence. So to tell you, in addition to our knowledge that adverbs are usually ending with lys. Adverbs end with lys usually, but they are one part of the adverbs, the group of adverbs, or the one category of the adverb. We have got, without any lys, the words like fast, hard, working as adverbs. We have got never, not as adverbs. They all work as adverbs. Let us see how they work. So I have just put it to analyze it properly by, the method of analysis gives the insight of any particular subject. So to justify my above definition that adverb qualifies a verb, an adjective, and an adverb, I have put the examples like this. The flower is very beautiful. By this time, we know that flower is a noun and beautiful is adjective. But very beautiful, the word very here works as a word which adds meaning to the adjective beautiful. Bahuti jaja sundar. So very beautiful. So the very here is acting as or working as an adverb because it qualifies an adjective beautiful. Why I'm discussing with you all these things, or why we are supposed to know this, is once we recognize their as words as adverbs, we can definitely place them properly to get the required proper meaning, or else we miss. That is usually what is happening in our day-to-day life, that we misplace the words and do not get the expected results or the effectiveness in the language. So the second one, my father walks very slowly. Let me analyze and tell you this, that my father, father is noun, my father, the word my becomes an adjective because it tells whose father. It tells more about the noun father. So my father walks, as you all know, is a verb. Walks, kriya padat. Then slowly. Slowly is a familiar adverb because it ends with ly, and slowly is an adverb because it qualifies or it tells more about the action walk. Okay. What about the very then? Very slowly. वो जो पहले slowly था उसको और धीमा बनाता है very. So it is putting its effect
on the word slowly, an adverb. So the word which qualifies an already existing adverb is also an adverb. So very is also an adverb. Then comes, my son studies hard. My son studies hard. Right? So here, walks very slowly. Slowly was an adverb and very was adding something to the word slowly. Here also, my son studies hard. So studies is action, showing word. It is a verb. So how he studies? मेरा बेटा पढ़ता है, परिश्रम से पढ़ता है. My son studies hard. Here I want to draw your attention of a very common mistake what we commit, that in the race of putting ly to all our adverbs, if we put ly to the word or to the adverb hard, it changes its meaning. If you say my son studies hardly, then the meaning altogether changes. And both are existing and both are working as adverb. My son studies hardly, it means very less chances, with a very less frequency. Hard परिश्रम से होता है. My son studies hard, मेरा बेटा बड़े परिश्रम से पढ़ रहा है और पढ़ता है. If I say my daughter studies hardly, means she doesn't study at all. She picks up her books or she goes to her studies rarely. She hardly means it is altogether an opposite meaning rather. So please be very careful when you use the word hard and hardly. Okay, it is a common mistake we all do. Then let me take you to some other types of adverbs. Rafiq is too wise. Rafiq is too wise. Here, the word wise is an adjective. Rafiq is wise because it is a to be verb. The adjective comes after the to be verb. So, Rafiq is wise. Rafiq is too wise. The word two is adding some meaning to this already existing adjective. So, it becomes an adverb. Too wise means, if you go to the dictionary and search for the meaning of the two, it is more than sufficient. Please remember this. More than sufficient. There is a sufficient degree of wiseness or whatever trait you have. Madness, wiseness, intelligence, whatever it is. If it is too, means it is more than sufficient. Right? So, Rafiq is too wise. Too is an adverb because it qualifies the adjective wise. Then, coconut is quite hard. Hard is also an adjective. Quite hard, काफी, सचमुच, जैसे कहते हैं, that is. टू का सरिसमान मतलब सिनोनिम इज काफी, और सचमुच जैसे कहते हैं रियली, क्वाइट बड़ा जैसे कहते हैं ना, बड़ा सख्त है, तो ये बड़ा आता है इस एडवर्ब से, क्वाइट. क्यों इस क्वाइट को मैं एडवर्ब कह रहा हूं? बिकॉज हार्ड is an adjective. It is qualifying. Coconut is quite hard. The sum is quite hard, quite difficult. तो उस गुण का जो गुण है या गुण की जो ताकत है उसको बढ़ाता है. It is adding meaning to an adjective. Next one. His grandfather walks very slowly. ये जो हम पढ़े थे, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये कुछ ऑर्डर में है. Quite, too, then very. ये सारे, they are not just the alternatives. They show the degree actually कि ये काम कैसे चल रहा है, ये गुण कैसा है. The first one should be quite hard. The second one should be too hard. The third one should be very hard. अगर आप डिग्री में काउंट करते हैं, सख्त है, बड़ा सख्त है, काफी सख्त है, बहुत सख्त है.
इतना फर्क लाता है. So adverbs play a very vital role in our sentence when we go by the meaning of the sentence. Then there is a very thin difference between an adjective and adverb. Usually we get confused. So I have put across some examples so that we can differentiate between them. He speaks in a loud voice. Loud voice. Voice is noun. Dhvani. Loud voice एक noun को qualify कर रहा है. कैसा है? करके. So loud voice, loud becomes adjective. इसी loud को मैं adverb में convert करके यही meaning ला सकता हूं. Like he speaks loudly. He speaks in a loud voice and he speaks loudly are the same, one and same. So he speaks loudly. Loud voice is replaced by an adjective loudly. In the same line, please, you don't speak so loud. देखिए ये और एक डिग्री का बात है. So loud. It is so hard. It is too hard. It is very hard. ऐसे ही so है. So loud. Right? Then comes, this is a hard sum to solve. देखिए hard sum. Sum माने गणित. Sum. S-U-M. So it is a hard sum. ये हो गया adjective because a sum noun है, इसको qualify कर रहा है. If I say my father works very hard, तो definitely अब my father hard के line में ही है. Neither the word hard is not connected or concerned to my father now. It is concerned to the work. That is verb of the sentence works. The manner in which he works, my father works. So it is telling that, so my father works very hard. Here hard becomes an adverb. Please try to understand the difference, the fine difference between an adjective and adverb. As the definition goes, you can say in simple word that if a word qualifies a noun or a pronoun, it is adjective. If a word qualifies other than a noun and pronoun, is adverb. Because it qualifies an adjective, an adverb, a verb, sometimes a preposition too. So we can divide adjective as noun and pronoun qualifier, adverb, all other parts of speech qualifiers. Right? Let us move ahead and understand more about the kinds of adverbs we have in practice. Kinds of adverbs. Okay, now adverb of frequency. Adverb of frequency, there are, you can see the different types of adjectives, adverbs under this heading, under this title. Twice, thrice, once, often, seldom, again, frequently, always. These are all the adverbs falling under the category frequency. कितने बार होता है? दो बार होता है, एक बार होता है, बार बार होता है, कभी कभी होता है. ये सब कहने वाले जो शब्द हैं इधर, they all fall under the category adverb of frequency. Then adverb of place. Adverb of place घटना या जैसे मैंने कहा कि ये क्रियापद को दर्शाता है, क्रियापद को कुछ और ज्यादा मतलब ऐड करता है. तो पहला हो गया, ये जो क्रिया हो रही है वाक्य में, ये क्रिया कब हो रही है, कितने बार हो रही है. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है तो एडवर्ब ऑफ वर्ब शोज कहां हो रही है, ये क्रिया कहां घट रही है. तो इट इज टेकिंग प्लेस हियर, देयर, एवरीवेयर, नोवेयर, इन, आउट. ये सारे शब्द एडवर्ब ऑफ प्लेस दिखाते हैं. ओल्ड इंग्लिश में था, हम जो आर्काइविक इंग्लिश कहते हैं उसको, पुरातन, हिदर, दिदर. कई नॉवेल में मिल गया आपको पुराने वर्क्स में, तो पोएटिक लैंग्वेज है, आर्काइक इंग्लिश कहते हैं उसको, हिदर, दिदर. राइट? देन एडवर्ब ऑफ मैनर, हाउ द वर्क इज गोइंग ऑन, हाउ समथिंग इज प्रोसीडिंग, दैट इज क्लियरली,
like he tells clearly, bravely, he fights bravely, hard, जैसे हमने देखा है, really, it all shows the manner, slowly, smoothly, nicely, manner in which the action is taking place. It falls under adverb of manner. Why I'm insisting or giving more tone to this is by understanding or knowing clearly what category the word, the adverb belongs, we can properly place it. The next topic is in the same lesson, where to place an adverb. So as a base to that topic, I am insisting on this. We should be able to categorize them as adverb of frequency, adverb of place, adverb of manner, adverb of degree. जैसे अभी हमने देखा था to, almost, quite, fully, partly, और भी है, मैंने कुछ एग्जाम्पल ही लिए हैं बस. एडवर्ब ऑफ नेगेशन एंड अफर्मेशन, जैसे क्रिया को सच बताने वाला या झुटलाने वाला जो शब्द होता है वो क्रिया के बारे में तो होता है. जैसे हमें बहुत डाउट होता है कि नॉट क्या काम करता है, नेवर क्या काम करता है क्रियापद में. नॉट, नेवर सारे उस एक वाक्य के क्रियापद को ही नकारते रहते हैं. ही नेवर टेल्स ट्रुथ, ही इज नॉट गोइंग, गो के बारे में तो कह रहा है, नकार रहा है उसको. सो नेगेशन अफर्मेशन के लिए श्योरली, सर्टनली, नॉट, नेवर, ऑलमोस्ट, he almost missed the bus, he almost fell down. Okay, then adverb of reason, hence, therefore, so, because, ये सारे adverb हैं and these are the categories. So इस तरह से उसको अगर एनालाइज करके, जैसे हम भाषा में कहते हैं ना, चीर फाड़ करके अगर हम जाए अंदर, तो हमें आओ, जैसे कहते हैं गहराई में रत्न है. ये जो नॉलेज का जो रस है, जो उसका क्रक्स है, इट इज देयर एट द बॉटम. वी हैव टू deep down rather, right? Let me take you to the next interesting topic, just is placement. प्लेसमेंट का बड़ा महत्व है भाषा में कि एक शब्द को कहां रखें हम. जस्ट मैंने एक एग्जांपल लिया है कि ओनली, एक शब्द मैंने लिया है, ओनली वर्क्स इन डिफरेंट कैटेगरीज, ओनली इज एन एडवर्ब आल्सो. अगर ओनली को सिर्फ मैं स्थान पलट करूं, इसका स्थान बदलूं, तो कैसा मीनिंग बदलता है. देखिए, ओनली आई किस द बेबी, आई ओनली किस द बेबी, I kissed only the baby, then I kissed the baby only. मैंने कुछ नहीं बदला है, सिर्फ only का स्थान बदलते गया हूं. तो हम जब स्थान के बारे में बात करते हैं, when we talk of the placement of the particular word, or you can say adverb, there are three places where we can place an adverb: at the beginning of the sentence, next at the end of the sentence, and in the middle of the sentence. राइट? तो इन तीन जगहों पे जब मिडल कहता हूं, उधर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, क्योंकि मिडिल में बहुत सारे होते हैं जगह. बिगिनिंग और एंड समझ में आता है. जैसे एडवर्ब ऑफ टाइम, जिसको हम कहते हैं टुमारो, टुडे, नाउ, देन, ये जो सारे जो एडवर्ब ऑफ टाइम्स है, इन एडवर्ब ऑफ टाइम, इन वर्डों को, इन शब्दों को मैं बिगिनिंग में रख सकता हूं और एट द एंड रख सकता हूं. बिगिनिंग में रखूं तो और जोर पड़ता है उस एक्शन के वक्त, वो जब काम करने का जो वक्त है उस पे जोर दे करके कहता हूं. टुमारो आई एम गोइंग टू बैंगलोर, आई एम गोइंग टू बैंगलोर टुमारो. इसमें सिर्फ इतना ही फर्क है कि कल ही जाऊंगा, कल जाऊंगा. अगर इफ आई प्लेस इट इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, टू टेल यू द subtler part of this, adverb of time can be placed only at the beginning of the sentence or at the end of the sentence. मैं कभी नहीं ये कह सकूंगा ग्रामेटिकली कि I go tomorrow to Bangalore. No, not allowed. Tomorrow, today अगर कुछ आता है तो वाक्य के पहले रखिए या अंत में डालिए. You can't use it in the middle.
सो ऐसे हम जब जाते हैं, जैसे मैंने ओनली का एग्जांपल देकर के आपको बताया कि कैसे वक्त मतलब मीनिंग बदलता है, वैसे ही अगर मैं टुडे या टुमारो जैसे एडवर्ब ऑफ टाइम, इनको अगर मैं पहले रखूं तो जाने का जो दिन है, जो वक्त है, उस पर थोड़ा ज्यादा जोर पड़ता है। अगर अंत में रखूं तो मीनिंग नहीं बदलेगा, कि उसका थोड़ा सा डिग्री कम हो जाएगा। सो लेट अस सी ऑन दोज बेसिस कि कैसे हम इनको प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ एडवर्ब्स, ठीक है, कैसे रखें, क्या रूल है। एज आई टोल्ड यू, ग्रामर इज अ रूल ऑफ लैंग्वेज। उसका यूज कैसे करना है, इसका जो कानून है, कानून का जो मतलब श्रेणी है, इट इज ग्रामर ऑफ द लैंग्वेज। सो एज आई टोल्ड यू, adverbs can be placed beginning, middle or at the end of the sentence. Now let us go one by one. मैंने जो लाल रंग में दिखाया है, लिखा है, वो सब गलत है सेंटेंस। तो उसका सही मैंने एक कारण दे करके थोड़ा एक्सप्लेनेशन के बाद उसी सेंटेंस को सही ढंग से लिखा है। तो गणेश लुक्स सैड एक्सट्रीमली, अगर हम ऐसे कहने के आदी हैं तो एक गलत है। क्यों? एक्सट्रीमली जो एक एडवर्ब है, इट इज एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री समझा रहा है। तो एडवर्ब ऑफ डिग्री जब आता है, इट मॉडिफाइज एन एडजेक्टिव। जो डिग्री होता है, ये एडजेक्टिव के, वाक्य के एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है। सो इट शुड बी प्लेस्ड लाइक गणेश लुक्स एक्सट्रीमली सैड। वो जो मॉडिफाई कर हो रहा है ना एक एडजेक्टिव, उसके पहले इसको बिठाना चाहिए। the sentence is wrong if I write like this, Ganesh looks sad extremely. नहीं, Ganesh looks extremely sad, because sad is adjective and extremely is an adverb which is qualifying the adjective. So I should place it before an adjective which it is qualifying. So Ganesh looks extremely sad. She looks very beautiful, not beautiful very. In some cases, we do not go wrong by the virtue of our practice or common sense, which we call. Otherwise, we feel, we usually go wrong in a passion to bring in some changes. When we are passionate or, we are fond of bringing in changes, then we miss the rules. वो उसने ऐसे लिखा है, मैं ऐसे लिखता हूं, इस चक्कर में हम इसको कहीं भी रख देते हैं। नहीं, इट इज नॉट अलाउड। ओके, सो इसमें आप देखिए, सैड एक्सट्रीमली और एक्सट्रीमली सैड में हम खुद कुछ करते रहेंगे ऐसे गलतियां, बट एक्सट्रीमली सैड इज करेक्ट। सैड एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो उससे पहले लाके रखिए एडवर्ब। देन रियली माय सन लाइक्स हॉट कॉफी। रियली माय सन लाइक्स हॉट कॉफी, तो ये जो वर्ड रियली है, इट इज एन एडवर्ब। इसको कहां रखना है? यूजुअली डोंट स्टैंड इन द बिगिनिंग। एडवर्ब ऑफ डिग्री है ये भी, रियली, तो इसको कहां रखना है? इसको यूज देम बिफोर द वर्ब, दैट इज माय सन रियली लाइक्स। लाइक जो क्रियापद है, यहां उसके पहले लाके रखिए। माय सन रियली लव्स, माय सन रियली लाइक्स, my son really gets annoyed, कुछ भी आप आगे लिख सकते हैं, लेकिन ये जो really है, ये शब्द अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं आप, तो इसको क्रियापद के पहले लाके रखिएगा। राइट? देन my mother kept carefully the plate on the small table. My mother kept carefully, carefully ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, कि ये रखने की क्रिया कैसे चल रही है, इन व्हाट मैनर द प्लेट हैज बीन प्लेस्ड। एडवर्ब ऑफ मैनर्स, स्लोली, केयरफुली, हार्डली। सो एडवर्ब ऑफ मैनर अगर आता है
तब कहा जाता है कि there should be nothing in between the transitive verb and its direct object. थोड़ा सा हमें वर्ब चैप्टर तक जाना चाहिए कि अगर हम कहे कि किसी वर्ब का अगर हम ऑब्जेक्ट है वर्ब को, जैसे ड्रिंक, क्या पीते हो, इसका मतलब अगर है चाय पीता हूं, दूध पीता हूं, अगर सम आंसर है, देन इट इज इट्स व्हाट से जो निकलता है उत्तर, उस वर्ब का वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। एंड जिस वर्ब को ऐसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, सकर्मक क्रियापद। तो अगर आप एडवर्ब ऑफ मैनर सकर्मक क्रियापद के साथ इस्तेमाल कर रहे हो तो इसको इस तरह से कीजिए, दैट इज माई मदर केप्ट द प्लेट केयरफुली। जैसे माई मदर केप्ट, क्या रखा, प्लेट को रखा, तो एक कीप एक ट्रांजिटिव सकर्मक क्रियापद है और ए इसका ऑब्जेक्ट है, कर्म है प्लेट। इनके बीच में कोई शब्द न डालिए, ग्रामर ये कहता है। यूजुअली हम ये गलतियां करते हैं, इसके बीच में कोई शब्द डालने की कोशिश करते हैं, तो एक केयरफुली यहां आना गलत है क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब है, तो वो अपने ऑब्जेक्ट से बहुत प्यार करता है, उसको पसंद नहीं कोई बीच में आने के लिए, he doesn't like something in between it. So my mother kept the plate carefully on the table is the right manner. Then all the participants loudly laughed at his remark. यहां क्या चेंजेस है इसमें, यहां क्रियापद लाफ है जो एक अकर्मक क्रियापद है जिसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, जैसे कीप क्या रखना है, जैसे लाफ हंसना है, क्या हंसना है, इसका कोई मतलब नहीं है, मीनिंग नहीं है, इट इज अब्सर्ड इफ यू आस्क अ क्वेश्चन व्हाट लाफ। सो जिसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है ऐसे क्रियापदों को हम इंट्रांजिटिव वर्ब या हिंदी में अकर्मक क्रियापद कहते हैं। तो अगर इसका इस्तेमाल है और उसके साथ आपको लाउडली ऐसे एडवर्ब ऑफ मैनर इस्तेमाल करने हैं, देन यू हैव टू intransitive verb place after, that is all the participants laughed at his remarks, laughed loudly क्रियापद के बाद रखिए क्योंकि वहां कोई आगे ऑब्जेक्ट नहीं होता है। You are told not to come between a transitive verb and object. If it is not a transitive verb, then definitely you can place it after the verb. So all the participants laughed loudly at his remark. तब जो हमें मीनिंग चाहिए होता है ना, इसको कहते हैं स्पिरिट ऑफ द लैंग्वेज, इसको कहते हैं स्पिरिट ऑफ द सेंटेंस। वो एक जो भाव लाना चाहते हो, हम लाना चाहते हैं, वो तभी आता है जब वर्ड्स आर केप्ट एट देयर प्रॉपर प्लेसेस। दैट्स व्हाई दिस होल एक्सरसाइज इज गोइंग ऑन। देन नेवर शी वॉचेस क्रिकेट मैचेस, नेवर शी वॉचेस क्रिकेट मैच। हम कहते हैं, सी एज फार एज the spoken English is concerned, verbatim, verbal जिसको कहते हैं, वहां तो चलता है, कैसे भी बात कीजिए आप, लेकिन जब आप लिखते हैं which becomes a record after some times, उस वक्त ध्यान रखिएगा। तो क्या होना चाहिए, she never watches cricket matches। यहां कौन सा एडवर्ब है, never, देखती है, कभी नहीं देखती है। So she watches never, पहले अगर मैं डाल दिया वाक्य के never she watches cricket matches is not correct. It should be placed she never watches cricket matches. एक सब्जेक्ट she है and क्रियापद watch है, देखना। She never likes, she never tells, he never asks। इस तरह से ही होना चाहिए, न कि कहीं और रख करके इसका मीनिंग ला सकते हैं। तो प्लीज सी, जैसे हम कहते हैं ना, तुक्के से हमें कुछ लगता है कि अरे हम तो ऐसी ही बात करते हैं, हम ऐसे जैसे हमने रेड लाइट इसमें इंक में दिखा, ऐसे कभी कंस्ट्रक्ट नहीं करते। इसको सीखने की क्या जरूरत है, जान करके सही करना और अनजाने में तुक्के में सही करने में फर्क है।
We should understand where we are not supposed to put. ये नहीं कि 10 में 5 सही हो गए तो हमें आ गया. हम जानना चाहिए, कारण चाहिए क्यों यहां रखना है. Right? So let us see for to be verbs. फिर एक वर्ब के मतलब बैकग्राउंड में आपको ले जाना चाहता हूं. टू बी वर्ब्स आर द वर्ब्स जैसे जो होने की बात कहते हैं. टू बी जैसे इज, वॉज, आर, वेयर, एम, ऐसे क्रियापद जब होते हैं, लेट इट बी प्लेस्ड आफ्टर द टू बी वर्ब. टू बी वर्ब होने के बाद तुरंत डालिए. कैसे? रंगा इज लेट ऑफन. ऑफन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. ऑफन बार बार, हमेशा. सो रंगा इज लेट ऑफन टू द वर्क प्लेस. हमें तो लगता है तो सही है, इसमें कौन से रेडिंग क्यों डाला आपने. लेकिन is is the to be verb used in the sentence, so it should come just after that. Ranga is often late to the workplace is the right answer, or is the right construction of the sentence. You know, there is a separate word, I mean topic in grammar, order of words. कभी डाल करके इन डिटेल में देखिएगा. मैं तो एक एडवर्ब की बात कर रहा हूं, वहां हर एक का डिस्क्रिप्शन है. ऑर्डर ऑफ words in a sentence is a title of the subject, title of the grammar topic. Okay, then you should carry always a torch at night. You should carry always a torch. हम कहते वक्त कह देते हैं. You should helping verb है. You should always carry होना चाहिए. हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में आना चाहिए एडवर्ब. ठीक है, तो इसके तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा. और ऐसे एक दो एग्जांपल मैंने दिए हैं. वी एवरी ईयर कंडक्ट क्रिकेट मैचेस. जैसे मैं एडवर्ब ऑफ टाइम कह रहा था, एवरी ईयर. तो एवरी ईयर एडवर्ब ऑफ टाइम है, इसको बीच में आने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है लिखने का. आइदर इट शुड बी एट द बिगिनिंग और एट द एंड. सो if I say every year we conduct cricket matches, तो every year पे जोर दिया जाता है. हर साल, हर एक साल कर ही देते हैं, ऐसे होता है. If I say we conduct cricket matches every year, मीनिंग सेम देगा. every year का जो जोर होता है, जो टंके के जोर पे जैसे कहते हैं ना, तो वो थोड़ा सा लाइट हो जाता है. Otherwise you are supposed to put adverb of time either in the beginning of the sentence or at the end of the sentence, right? Then let us see some जैसे डिग्रीज होते हैं एडजेक्टिव के लिए, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, वैसे एडवर्ब में भी डिग्रीज होते हैं. एडवर्ब्स आर डिफरेंशिएटेड इन डिग्रीज. जैसे मैं कहा शी सिंग्स वेल, यहां शी कोई वेल नहीं है, वो अच्छी नहीं है. वो जो गाना गाती है, एक्शन है, वो वेल है, इसलिए वो एडवर्ब है, वेल. So she sings well. अगर मैं कहूं she is well, then वो adjective हो जाता. She is good, she is better, she is the best, तब adjective होता. लेकिन यहां ये जो well है, बढ़िया, well गाना है, एक verb को बढ़िया कह रहा है वो, so it is an adverb. So she sings well, positive degree है. She sings better, comparative degree है. She sings the best of all in the class or all in the group. ठीक है. सो इन डिग्री को थोड़ा सा जानिएगा. एडवर्ब में भी डिग्रीज होते हैं, हमें पता रहे. देन वर्ब्स एंड सुटेबल एडवर्ब्स. जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि एक एडजेक्टिव कहते वक्त आपको याद था कि गुड, इस एडजेक्टिव को लेकर हम जीना मतलब जिंदगी जी लेते हैं. लड़की अच्छी है, खाना अच्छा है, लिखावट अच्छी है, उसका ड्राफ्टिंग अच्छी है, उसकी प्लीडिंग अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, फिर दूसरे क्या करेंगे एडजेक्टिव, है ना. जैसे इसलिए एक सूटेबिलिटी होती है, सूक्त जिसको हम कहते हैं. आंसर्ड एक क्रियापद है, तो इसको किस तरह का एडवर्ब लगने चाहिए? आंसर्ड इमीडिएटली, आंसर्ड केयरफुली, आंसर्ड टार्टली, टार्टली. Then fought, fight अगर क्रियापद है, what are the suitable adverbs? Bravely, furiously, gamely, right? Wept,
रोना, किस तरह से रो सकते हैं? क्या एडवर्ब्स हैं? बिटरली, टचिंगली, सैडली, डिस्ट्रैक्टेडली। रोने के लिए इतने सारे सूक्त मतलब एडवर्ब्स हैं। सो ये जानिएगा कि एवरी वर्ब हैज गॉट इट्स ओन सूटेबल एडवर्ब्स। प्लीज यूज देम, देन आवर लैंग्वेज बिकम्स मोर इफेक्टिव, राइट? सम पिक्यूलियर एडवर्ब्स करके मैंने लिखा है, जो आपको कह सकते हैं कि अरे ये कैसे एडवर्ब हो सकते हैं। ओके, जैसे प्लीज कम इन। कम ये क्रियापद है, कम इन, यहां प्रीपोजिशन नहीं हुआ है। इन इज वर्किंग ऑन द वर्ब कम, so it is adverb of place. Please come in, please go out. At the same time, I met him once in the office before. जैसे before को हमें लगता है कि preposition है, conjunction है, नहीं। I met before, पहले। Then she has seen him before, and have we met before? इधर थोड़ा सा लगता है, यस हम जानते हैं बिफोर एडवर्ब हो रहा है, मेट बिफोर, पहले मिले हम। तो इस तरह से एडवर्ब को, जैसे मैंने कहा कि ये सिर्फ वर्ब को मीनिंग ऐड करने वाला शब्द ऐसा नहीं है। इट हैज गॉट लॉट ऑफ वैरायटीज ऑफ रोल्स टू प्ले इन अ सेंटेंस, एंड इट हैज गॉट इट्स ओन इंपॉर्टेंस। जैसे मैंने आपको दिखाया, सिर्फ प्लेसमेंट पे वो पूरा सेंटेंस को सेंटेंस के अर्थ को चेंज कर देता है, बदल देता है, right? So let us take due care while using right kind of adverbs at right place. Okay, this is what I wanted to share with you today. Then how an adverb is formed, if the time permits. How an adverb is formed? Usually most adverbs of manners are formed by adding ly. This is what we know. But other than that, जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ नाउन विथ एडजेक्टिव, एक नाउन को हम एडजेक्टिव के साथ जोड़ करके एडवर्ब बना लेते हैं। समटाइम्स जो होता है, देख लीजिए, समटाइम्स सम एडजेक्टिव है, टाइम नाउन है। समटाइम्स, मीनवाइल, मीन टाइम, मिडवे, अदरवाइज, ये सारे एक एडजेक्टिव और एक नाउन को मिला करके, with a combination of these two are formed an adverb. Then afoot, afoot, पैदल जिसको कहते हैं afoot. Then abed, asleep, sleep we know, but just adding the prefix a, asleep, he is asleep, my daughter is asleep. Ahead, he moved ahead of me in the career. Abroad, away, way एक noun था, just added prefix a to that and formed a adverb. Then pronoun based अगर मैं कहूं तो होता है, जैसे मैंने कहा था, hither, thither, ये थोड़ा archaic है. Means we should know how the words are formed, जिसको हम etymology कहते हैं, right? So please take care of all these things. Every single topic, as you know, has got its own depth, but there is something called practical depth. So I have tried to touch that practical depth in the topic adverb, and share with you some practically important part of that topic. Okay, I think you have learned something, we have rather learned something on the topic adverb. Moving ahead, as time permits in a usual course, we'll go to the remaining three parts of our parts of speech, that is conjunction, preposition, interjection and all. So please join and share with your children, share with your young ones who are eager to build their career. They should know more to height the larger heights, scale the larger heights rather. So don't take the grammar portion lightly. It is the endeavor of Vikas ji. Under him, under his guidance, we all
who are taking grammar classes. It is our endeavor to share with you the practical importance of the grammar under the series, grammar series. Okay, thank you. Vikas sir, to you now. Yes, sir. Mr. Patwardhan, as usual, the insights were insightful. And as you rightly said, that we will take the other parts of the grammar in the coming days, and those who are connected with us or those who are not connected with us can join the WhatsApp or the Telegram group or stay connected with us on the social media of Beyond Law CLC on the LinkedIn, Instagram, as well as Facebook. Everyone stay safe, stay blessed, and Mr. Patwardhan,